typecasting. So guys, what is mean by typecasting? Typecasting is what? The conversion of value from one data type to another type is called as typecasting. Means when we want to convert my values from one data type to another data type, so we use the typecasting concept. Suppose अगर मेरे पास में int type का data है, so I want to convert into a float. Suppose I have a character type of data, I want to convert into a I have a integer type of data, I want to convert that into a string. So that is possible by using the typecasting. So there are various predefined functions are available for typecasting. So we have the number of functions, that is int type. Int के लिए हमारे पास में int typecasting है. If you want to convert into a float, so then we have the float function. Then if you want to convert into a complex, so then here we have the complex function. Then we have the bool function, and then we have the str function. So by using this function, we can do the typecasting with the Python. So now let's discuss how we can perform this practically. So first we are going to discuss about the int data type. So by using int data type, we can convert the other types into a int. Okay. So like what? Let's see कि मेरे पास में एक वेरिएबल है. ओके. सो लाइक एक वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करते हैं. सो वी हैव दैट इज इंट एंड वी आर मेंशनिंग द फ्लोटिंग वैल्यू. सपोज 33.55. सपोज आई हैव वैल्यू. ओके. सो नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट. ओके. सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ इंटीजर. मींस अगर मुझे फ्लोटिंग वैल्यू को अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. ओके. Then we can convert any values. Okay, but in Python the complex value cannot be converted into integer. Okay, what is your complex value? We just discuss what is complex value. Okay, so what is complex value? Like for example, we have 5 plus 2j. We have, suppose 5 plus 2j we have, right? So this complex value cannot be converted into integer. So like suppose I am mentioning like this, like int okay, so it will throw an error. Okay. Now next we have, that is what is the value of true and false. So of course true value is 1 and false value is 0. Okay. So if you want to typecast with the true, so of course it is possible with the Boolean types, that is true. And if you want to do the typecasting with false, so of course it is possible with the false. Okay. So it is possible. So what is the value of the true? True value is 1 and false value is 0. Okay. So this is possible. Okay. Also you can convert the string values into an integer. Okay. So how we can convert? Like suppose I have an int and I have a string values. So string values are enclosed in double quote. Okay. Or in a single quote you can mention. Okay. So I have suppose a 22. Okay. So of course it will be converted, but that will be integer. Okay. That will be in the form of integer. Means अगर मेरे पास में कोई string है, क्योंकि अगर जब आप अगर वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम लोग, या हम लोग जो भी एप्लीकेशंस जो भी हमारे पास में लैंग्वेज रहती है, लाइक जावा, पाइथन एंड एक्स्ट्रा जो भी लैंग्वेजेस होती है, सो व्हेनेवर डेटा इज कमिंग फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द कीबोर्ड, ओके, सो दैट डेटा इज कमिंग एज अ स्ट्रिंग. ओके. C++ में इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, बट इन अदर केस इन अदर लैंग्वेजेस इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एज अ स्ट्रिंग. ओके. दैट वी हैव टू कन्वर्ट. सो अगर मेरे पास में जो डेटा अगर आया है, तो सपोज मेरे पास में कोई मोबाइल नंबर आया है किसी का, मेरे पास में किसी का पिन कोड आया, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर. ओके. सो देन दैट टाइप यू कैन यूज दिस फंक्शन. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट में एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर. बट लाइक सपोज आई वांट टू कन्वर्ट दिस आशीष, सपोज. So is it possible? Can you think that it is possible? No, this is not possible. String cannot be converted into integer. Okay, so this is not possible. Then we have, that is if you want to convert same with the float, so also float is not possible. Like suppose I'm having a variable like 55.12. Okay, so that will be converted into a integer, but suppose I am mentioning in the form of the string float. Okay, so again it will show the error, क्योंकि आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए जो कि कन्वर्ट करना है, राइट. तो हम लोग जो है इंट फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी टाइप का वैल्यू हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स टाइप. तो जो कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके.
So if you want to convert str type to int type, so compulsory str should contain only integer value. Okay, it will be contain only integer value. अगर मैं string को convert करना चाहता हूँ integer में, तो उसमें क्या चाहिए हमें, सिर्फ integer चाहिए, आप other values को हम लोग convert नहीं कर सकते. Then next we are going to discuss that is the float function. So what is the float function? Similarly with the integer function, we can convert in another type by using a float function. So how it is possible? So we have the float function. In case of float function, we can pass the integer. So of course, what will be the value? 10.0. Okay. So by using float, we can convert into a integer. It is possible. Okay. By using a float, we cannot convert the complex type of values. Okay. Of course, if you want to convert this like 10 plus, suppose we have the 2j. Okay. So it is not possible. It will show an error. Okay. And if you want to convert this Boolean type of data, what is a Boolean type of data? So Boolean type of data we have that is true and false only. Okay. So of course it will show a result that is 1.0 and false that is 0.0. Okay. So this is possible. But similarly, अगर मैं इसमें कुछ convert करना चाहता हूँ, so like suppose I want to mention float, और मैं इसमें mention करना चाहता हूँ like 1 mention करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है float में अगर मुझे इसका रिजल्ट, so that is not possible because this is a string. Okay, so we have to perform some manipulation with the string, then we can convert this. Okay, so in case of float, we can convert any type of values to a float except the complex type, and whenever we are trying to convert str type to float type, compulsory the str should be either the integral value or the floating point. तो आपका जो भी वैल्यू है फ्लोट के केस में या तो इंटीजर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए हमारे पास में फ्लोटिंग वैल्यू होना चाहिए, एंड शुड बी स्पेसिफाइड ओनली इन द इंटीजर फॉर्मेट और इन द डेसिमल फॉर्मेट. ओके, आपको डेसिमल के फॉर्मेट में होना चाहिए. तो आपको पता होगा कि बाय डिफॉल्ट एवरी द लैंग्वेजेस फॉलो द बेस डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इट विल शो एन एरर लाइक विथ बेस 10. तो विथ बेस 10 मींस व्हाट, डेसिमल नंबर सिस्टम. तो आपको ये फॉलो करना है. So then we have the complex function. So we can use the complex function to convert the other types to complex data type. So like complex type of values, just we have discussed like suppose we have 2 plus 3j. This is the complex value. Okay, so we have the complex function. So by using complex function, we can convert any type of data into a complex. So let's see and practically, so how we can convert and how it is possible. So for example, I want to convert integer value. So we have the complex function we have, and by passing a value that is 10, suppose I have passed, like suppose I'm passing 2. Okay, so and so what it will do, it will print a complex number that is 2 plus 0. Okay, 2 plus 0. So similarly, I want to pass that is comma, suppose one of the floating values. So what it will do, it will print 2.6 plus 0. So any type of value we can convert into a complex. So in other languages we are facing very problems like अगर मैं ऐसा ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो like other जो language like C, C++, Java, it is not possible easily. Okay, we have to do some manipulation. Then similarly अगर मैं 2 के साथ में अगर ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो what is the value of 2? True value is 1. Correct. So what is the value of true? True value is 1. So it will be 1 is 1 plus 0 j. It will be. Of course, if you want to convert false, so what will be the value? Of course, 0. Okay. Then we have that is if you want to convert the string value, so it is possible to convert the string value. So like similarly, I can mention that is suppose I am mentioning the 4. Okay, so 4 plus 0 j it is mentioned. Okay, पर 4 की जगह आपको 4 नहीं लिखना है, तो पता चला कि आपने ऐसा कुछ किया like what you are doing कि हमने ऐसा कुछ mention किया f4 you are 4. Okay, so that is not possible. Okay, in Python that is not possible. Then we have that is so in a complex data type, like we can use this complex function or method, we can say, to convert x and y into a complex number, such as x will be the real part and y will be the imaginary part. तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सिमिलरली अगर आप उसमें दो वैल्यूज अगर मेंशन कर दे तो वो भी आपका वैल्यूज रिटर्न करेगा. दो वैल्यूज मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल कि सपोज मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मेंशन किया लाइक 3,4, so what it will do, it will convert direct 2 plus 4j. Okay, similarly we can perform with false true and false with operation. तो true and false भी आप उसमें पास कर सकते.
तो जो भी वैल्यू हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर में पास करेंगे वो क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंट करके देगा। तो इतना इजीली पाइथन ने क्या किया है, उसको कन्वर्जन का इतना इजीली आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि हमें अदर मैनिपुलेशन उसके साथ में करने की कोई जरूरत। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट इज the next we are going to discuss, that is the bull function. What is meant by bull function? So bull function means what, we can use this function to convert other type of values to the bull type, means boolean type. So boolean type of value means we have the false and true. ओके तो हमारे पास में false और true है, तो मेरे पास में bull नाम का फंक्शन है। तो bull नाम के फंक्शन में अगर मैंने 1 पास किया तो ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। बुल नाम के फंक्शन में अगर मैंने 0 पास किया तो क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। करेक्ट। बुल नाम के फंक्शन में अगर मैंने 10 पास किया तो क्या रिटर्न करेगा, ऑफकोर्स ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वैल्यू पास करता हूं तो ये क्या करेगा, हमेशा आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा, उसके जो वैल्यूज रहेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर बुल में अगर आपने मान लो 0 की जगह 0.0 पास किया तो फॉल्स रिटर्न, 0 के केस में ओनली फॉल्स, अदर देन इट विल रिटर्न द ट्रू। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पास करो, ये हमेशा आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लाइक अगर आपने इसके अंदर में कोई स्ट्रिंग पास किया, सपोज आपने इसके अंदर पास किया कि ट्रू रिटर्न पास किया, ऐसा कुछ, तो क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग भी इसके अंदर में पास कर सकते हैं। ओके, बट सपोज वी आर मेंशनिंग एनी ब्लैंक वैल्यूज, तो अगर मुझे ब्लैंक वैल्यू अगर पास करनी है तो ब्लैंक वैल्यू के केस में आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जब भी हम कोई ब्लैंक पास करते हैं तो इसके पास में कोई वैल्यू नहीं चाहता है। तो जब इसके पास कोई वैल्यू ही नहीं चाहता है तो ये क्या कंसीडर करेगा कि मेरे पास में कुछ वैल्यू ही नहीं मिला यूजर से। सो इन सच केस इट मे बी पॉसिबल इट विल बी प्रिंट दैट इज फॉल्स। ओके, सो दैट यू शुड नो। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव, दैट इज द str function. What is mean by str function? So in case of str function, so we can convert any type of value into a str. So how it is possible? Okay, so we have the str function, that is suppose str I'm mentioning here. So str of 10, str of 10, so it will be convert into a 10. Okay, suppose I want to mention, that is suppose I have a value that is 55.2. Okay, so it will be mentioned, it will be converted into a string. So any type of data we can convert into a string. Then so here is the immutability concept is there. So immutability concept we have already discussed, what is meant by immutability. So immutability means what, कि अगर मेरे पास में ऑलरेडी अगर एक वेरिएबल है, उसने कोई अगर वैल्यू होल्ड किया है, सेम वेरिएबल अगर मेरे पास में कोई दूसरा वेरिएबल है अगर सेम वैल्यू होल्ड करता है, so we can say that that is the immutability concept, means in with the same object we cannot modify the values, that we have already discussed with the immutability concepts. Okay, so that point you should know. देन वी हैव दी बाइट्स डेटा टाइप, कि हमारे पास में बाइट्स डेटा टाइप क्या होता है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होता कि हमारे पास में कुछ डेटा टाइप्स थे जो कि बाइट्स हमारे पास में डेटा टाइप था। तो ये बाइट्स डेटा टाइप क्या करता है, कि व्हाट इज मीन बाय बाइट डेटा टाइप? बाइट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ बाइट नंबर्स जस्ट लाइक एन एरे. So whatever array we have like in C++ or Java, if you know about the basics of programming, so we have the array. Array is what? Array contain the values. Array is the collection of the values, we can say. Okay, so similarly we can create the arrays here. Okay, so what I will do, I will write a program for it. Okay, so for example I have a variable that is x equals to, मेरे पास में एक प्रोग्राम है x equals to, सपोज मेरे पास में एक वैल्यू है that is 10, 20, 30, 40, कुछ इस तरीके से मेरे पास में वैल्यूज है. ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, लाइक आई एम प्रिंटिंग, आई एम कन्वर्टिंग दिस बाय इन द फॉर्म ऑफ द बाइट. ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं कि एक और वैल्यू इसमें डाल देते, दैट इज 50. ओके, नाउ लेट मी प्रिंट. सो x, so what is the x value, what is the values of the x? So x values are, that is 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, now what we can do, we can convert this into a bytes we can convert. So we have, that is x, now we are converting into a b. So when I printing b, this b, so it is showing that some in byte format. So what we have to do, we have to write a for loop here. Okay, so similarly we can print the values, like suppose
I want to print like print p of 0. Okay, so by using a print of 0, it will show 10. Of course, we can use any index number, suppose 3, so it will print 40. But I want to print all the numbers, so this is not possible by using array because this data are stored in the form of the bytes. Okay, so here we have to use the for loop. Okay, of course we will discuss what is looping. So just I am writing the for loop. So for I in p, and we have the function that is print function we have. Okay, and in case and we are printing the I. So what it will do, whatever elements are present in b, it will be stored one by one into I, and then it will be print. Okay, so whenever we are printing it, so it will be print. Okay, okay, so it will be print, that is 10, 20, 30 and 40 and 50. तो जब भी हमारे पास में अगर बाइट्स अगर होता है, तो बाइट्स का जनरली काम क्या है मेरे पास में, कि जो भी हमारे पास में डेटा है उसको क्या करेगा, वो एरे में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये जस्ट लाइक एरे. तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाइट्स फंक्शन के साथ. आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टूड. Okay, also question answer will be taken at the end of the session today. Okay, so you can ask the questions, and the sheet, the Google form, attendance Google sheet is Google form is already shared, so you have to mention your attendance today. The faculties who are attending daily and mentioning their attendance in attendance session, attendance sheet, so the faculties will get the certificate for the same after the FTP. Then next we have, that is byte array data type. So we have already discussed about the what is we have already discussed in data types, that is there was a mention, that is byte arrays. What byte array is doing here? So byte array is exactly same as a bytes data type. तो जो भी byte जो data type हमने discuss किया है अभी, same उसके जैसा ही होता है हमारे पास में bytes array भी, that is element can be modified. पर जो bytes के केस में हम लोग जो उसका data modify नहीं कर सकते bytes के केस में, बस in case of bytes array it is possible. Okay, so that is possible. Like for example, we have the like b, we want to like we cannot print b. Okay, so like we have used this command. Okay, that is for I in b, and what values are there. So values are like 10, 20, 30, 40 and 50. So these are the values. Okay, what I want to do is, the 0 number index element is 10. 0 number पे कौन है मेरे पास में, 10 है. I want to modify that element. Okay, so what I'm doing here, I want to modify that b of 0, that is b of 0 is modifying with suppose 55. Okay, so now let me check. It is possible? No, because bytes object does not support the item assignment. Means अगर आपने बाइट्स एरे क्रिएट किया है, तो आप उस सेम एरे में आप फिर से वैल्यूज क्या कर सकते हैं, उसमें अपडेट नहीं कर सकते. तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो ऐसे केस में हमारे पास में फिर बाइट्स एरे यूज होता है. तो बाइट्स में हम लोग जो है, जो भी एरे हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग डेटा मॉडिफाई नहीं करते. इस केस में हमको क्या यूज करना है, बाइट एरे. तो बाइट एरे इज ऑल्सो सेम एज अ बाइट्स डेटा टाइप. ओनली द डिफरेंस इज दैट वी कैन मॉडिफाई डेटा विद द बाइट्स एरे. Okay, similarly what we have a variable that is x, and its value is like 10, suppose 20, 30, 40, 50 and 60. We have values like this. Okay, then we have the variable that is suppose b we have. Then we have byte array function. Okay, byte array function we have. Then we are converting into p. Okay, we are assigning into a b. So it will be assigned. Okay, now what I want to do, I want to use this for loop. Okay, to print this data. Okay, so now I can print. Now what I want to do is, I want to modify that data. Like what I can do, same thing we are doing. b of 0 is equal to 55. I want to do. So that is possible. Like let me print again. Okay, so that is possible. So means what is the difference between byte and byte array, कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं डेटा को मॉडिफाई नहीं करना है मेरा,
ठीक है। सो इन द सेम प्लेस जो मैंने ऑलरेडी डेटा डाल के रखा है इंडेक्स वाइज जो मेरे पास में डेटा है अवेलेबल, तो हमारे पास में बाइट अवेलेबल है। अगर मुझे उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो मेरे पास में फिर बाइट्स अवेलेबल है। तो ये मेरे पास में डेटा टाइप्स है जो आप